કઈ બે સંખ્યાનો સરવાળો 23 થાય? બગડ તગડ 23 20 ને 3 23. તો તમારે અહીં બે કાર્ડ છે, બે કાર્ડ ઉપયોગ કરવાનો છે. આ બાજુ 11 થી 20 આવેલા છે, આ બાજુ 1 થી 10. બે કાર્ડ ભેગા કરવાના અને એનો સરવાળો કેટલો થવો જોઈએ? બગડ તગડ 23. તમારે નક્કી જ કરી લેવાનું, એક સંખ્યા રિપીટ થવી જોઈએ નહીં. આ છોકરી કીધું કે સાહેબ 20 ના 3 23, બીજી છોકરી આવે 20 ના 3, એમ નહીં, અલગ અલગ તમે વિચારી લ્યો, મનમાં વિચારી લેવાનું. કૌશલ્યાબેન આવશે અને કઈ બે સંખ્યાનો સરવાળો 23 થાય છે? अपने बच्चों से तो हर कोई प्यार करता है, पर हम टीचर्स हैं जनाब, हम दूसरों के बच्चों से भी बहुत प्यार करते हैं। एक शिक्षक कितने अच्छे से पढ़ाते हैं ये बच्चों पे भी उतना ही निर्भर करता है। एक क्लास का माहौल कैसा है इसकी जिम्मेदारी एक शिक्षक पे जितनी है उतनी ही जिम्मेदारी उस क्लास में मौजूद बच्चों की भी होती है। देखिए ये ना दो तरफा प्यार है, शिक्षक पढ़ाना चाहे और बच्चे पढ़ना चाहे तब जाके बात बनती है, वरना एक तरफा प्यार में दुख बहुत है। अब सोच के देखिए, शिक्षक पढ़ाना चाहे बच्चे पढ़ना ना चाहे तभी बच्चों का नुकसान है, बच्चे पढ़ना चाहे शिक्षक ही ना पढ़ाना